हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग ड्रिलिंग प्रोग्राम ही करेंगे, मैनुअल प्रोग्रामिंग इसमें। बट इसमें हम लोग ड्वेल टाइम देंगे, जो कि होता है कि जब ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है तो लास्ट पॉइंट पे जब ड्रिल होता है तो वहाँ पे कुछ बर और चिप्स रह जाते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए तो हम लोग कुछ सेकंड्स तक ड्रिल को ड्रिल टूल को वहाँ पे रोकते हैं, तो उसे ड्वेल टाइम कहते हैं। सो ये भी हम लोग मैनुअल प्रोग्रामिंग में ही करेंगे। थोड़ा हम लोग का वर्क पीस वही रहेगा, बस थोड़ा मैंने उस ड्रिल होल की लोकेशन चेंज कर दी है। तो हम लोग प्रोग्राम मैनेजर पे जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा कि इसमें हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो G81 ने मतलब ड्रिलिंग के लिए कवर किया था वही है, बाकी चीज़ें सब सेम है। तो हम लोग ओपन करेंगे प्रोग्राम। तो मैं एक दिखा देता हूँ। So as we have taken and this is G54, we have taken block. Let me remove this graphic view. See, 0 0 here. We are taking offset here. X1 100, same size workpiece. और -10 mm हम लोगों ने डेप्थ ली थी। G17 same, everything is same. The difference is in drilling this operation we have to give the dwell time. Either we can give revolution मतलब how much revolution there is at last point. See here, we have to give in seconds, so I have given 2 seconds, as you can see, and rest is same. See, shank, we have to click on shank, not the tip. If you select the tip, it will include this, and so we have to click on shank. Then we'll accept the cycle, and then I have taken different positions of hole. Same. See, let me include more. So let me do this. X 50 or leave it. Already I have given 2 holes, so it's not necessary. Let me show in graphic view this one and this one. So we'll accept it, and then we'll make home position X0 Y0, and tool will move to Z0 position. Tool, as I have not given Z0 because I will tell taking offset, how to take offset in separate video. So uh, I can't include everything in one video. The video will be very long, so I'll make it separately on each topic. So let's start the simulation. Please focus on last point of drill. First, let me show in top view. Firstly, the workpiece has been appeared. See, around 2 seconds, the tool will stop at last point. As you can realize, or you can feel it. So let me show in 3D. And cycle start. So feel the 2 seconds there, but I have given 10% feed rate. See, the tool has come this position. See, there was a stop for some seconds.
Let me show again. Then cycle start. Cycle start. See, the spindle tool will stop for 2 seconds around. See, you can see. So this is how dual option works in drilling. So we'll be covering everything about Siemens controller. This is not the introductory video of Siemens, and I'll be covering each modes, what are different modes like jog, reference and MDA, everything. I'll be covering everything like spindle start, stop, feed right and feed override and spindle override, single block and everything. So it will be in different videos, separate videos. It can't be in one video because the video will be too longer. तो हम लोग अलग अलग वीडियोस में एक एक कमांड्स, एक एक कोड्स, जी कोड, एम कोड्स को कवर करेंगे। तो चैनल को देखते रहिए और हम लोग कोशिश करेंगे इसमें जी कोड प्रोग्रामिंग भी करेंगे। और वैसे तो फानुक प्रोग्रामिंग पे हम लोग फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।